हेलो एवरीवन। आज के इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं रतन झा। Congratulations रतन, you have cleared the MBA exam. A very much congratulations to you. थैंक यू मैम। थैंक यू सो ओके, मच। तो आज हमारे साथ रतन झा हैं एंड वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपना जो एक्सपीरियंस रहा है ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम, वो सब कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे। सो फर्स्टली पहले हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। सो रतन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हमारे व्यूअर्स को बताइए। Ma'am, as you know, my name is Ratan Jha. I am from Unnao, Uttar Pradesh. I have completed my earlier education from here itself, and recently I have done Bachelor of Arts from Kanpur University. Along with my graduation, I have completed NCC 3-year certificate, that is C certificate, and NSS 2-year certificate. And I have also completed an internship with ICF UPA program. And my hobbies includes reading books, listening music, and cooking. Thank you, ma'am. दैट्स ग्रेट। ओके, सो रतन, आपने जैसे कि एग्जाम क्लियर किया, तो मुझे आपसे सबसे पहले तो यही जानना है कि आपको इस एग्जाम क्लियर करने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है। मतलब आपने किस तरीके से इस एग्जाम को समझा, और ये समझा क्योंकि क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कोई प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, ये सब कुछ पब्लिश होता नहीं है। Yes, सो ma'am. आपने मतलब कैसे उस नर्व को पकड़ा कि ये चीज मुझे पढ़नी चाहिए, ये मेरी स्ट्रैटेजी। अपना एक होता है ना, हम एक रूटीन बनाते हैं, पूरा Yes, प्लान ma'am. करते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं। सो Yes. आपने उसका कैसे किया था? Ma'am, firstly, I go through the syllabus first because हम्म। whenever we start preparation for any exams, we need to go through the syllabus, whole syllabus, what paper will ask to you. हम्म। So that was comprises with the English, maths, reasoning, हम्म। and GS. So as I am a banking aspirant, so my ओके। reasoning and maths are quite good, and I am quite good in English as well. But GA is my kind of weaker section. ओके। So what I have done when I completed my graduation, I was actually preparing for the MA entrance, MA in psychology. But at that time, I got some counseling from my elder brothers who told me why not you are going for the MBA because you have good common skills, like you can grow your career in this sector as well हम्म। as. So I have just searched it through like what are the options by which I can do the MBA. So I go through the CAT, MAT, but at that time CAT forms were not available. So I go through the BHU MBA and AU MBA. I have filled the both form, and I started my preparations like I was regular with the maths, reasoning, and English. So that was not my concern, but I just want to know the what are the mock tests are available in the market. So I हम्म। go through the channel, I searched it on YouTube. So I came to know about the Abhi Concept channel. यस। That is our channel. So they are just offered at that time five या, mocks for AU and I think BHU as well. BHU as well. So I bought the for AU especially because I thought that I can prepare for both by these mocks. या। So as sir has told me earlier in the free videos that both are equal kind of paper, so या। you can prepare it from one mock. So I यस। bought those mocks and just I do all the mocks very sincerely, and I just got the instinct that what are the questions they are asking, what will be the pattern. Although I was not good in maths as well because my advanced portion is not so good. Like I am not good in arithmetic as well. So what I thought that I can do it good in reasoning and English, and I can do good in GS as well, and I can skip some questions in maths. So that ओके। was my strategy. But what happened in the examinations? In the math paper, there was the more weightage of mensuration portion. हम्म। And actually, I am teaching some students of class 8th, 9th on regular basis. So ओके। I was ओके। just okay with those concepts. So my math paper was eventually went very well. So ओके। these are the things what I have done during my preparation. ओके, सो ये टीचिंग से भी आपको काफी हेल्प मिल गई होगी, आपके Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट्स काफी सही रहे होंगे। Yes, ma'am. It helped me a lot. हाँ, एंड जो मॉक टेस्ट की आप बात कर रहे हो,
एक्चुअली में मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाए बिना इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको एग्जाम की नर्व पकड़ पाओ कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। टॉपिक सबको आता होता है, बेसिक चीज होती है एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करना। Yes, वो ma'am. चीज करनी बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, वो आपको प्रैक्टिस पहले करनी होती है। Yes, एंड ma'am. इससे फायदा ये होता है टाइम मैनेजमेंट, राइट। सो आपने Yes. अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी की थी कि मैं इतना टाइम जो है वो मैथ्स को दूंगा, इतना टाइम ऐसे जीएस के लिए रखना है, कुछ टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी आपकी? As I told you earlier that I am a banking aspirant, so हम्म। I was just continue with the preparations. I I think I didn't change my timings for this particular examinations because I was just regular with my strategy. Like in the morning, I was going through the English DI portions and all of that. I was aware about that. So I was just starting with my current affairs sections. Then I go for the English. Then in the evening I go with reasoning portions, and at the last I was solving the maths questions as well. But I was just stick to the mock test because I हम्म। thought this is the only way that can help me, because I came to know about the we concept channels that it is just preparing the students for since I think more than 5 years I think. यस So, यस। so they have the good idea about the examinations. So I was just stick to the channel. I followed all the strategies given, and but I was following Abhi sir from very start from my preparations. So I was just stick to him. What they have just told me, I just followed blindly, and I got the results. दैट्स वेरी वेरी गुड। सो बेसिक बात है आप सब व्यूअर्स के लिए कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट इन द सेंस क्वेश्चंस लगाना, उससे आपको ये पता लगता है कि यार मुझे कितना आता है इस कॉन्सेप्ट में। अगर मैंने जो चीजें पढ़ी हुई हैं उस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मुझे समझ में आता है कि यार मुझे ये क्वेश्चन में पढ़ने की भी और जरूरत है, Yes, और ma'am. टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, And you प्लस can टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। Yes, ma'am. And you can select the questions like paper is not kind of you have to attempt all the questions. Like you can select the questions what favors you. Like you can या do that very एग्जैक्टली। well. So mock test will give you that instinct as well. Like what are the questions that you can attempt very इजीली। comfortably, and what are the questions which you don't have to try at least, so या that you can बिकॉज uh, save time in the examinations. बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज नॉट इक्वल ना, हमें सारे क्वेश्चन नहीं आते होते, वी हैव टू लीव सम क्वेश्चंस आल्सो। तो वो हमें Yes, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है, आइडिया लग जाता है कि इतने टाइम में हमें इतने टाइम फ्रेम में क्या चीजें कैसे अटेम्प्ट yes, करनी ma'am. है, बहुत जरूरी है। ओके सो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पूरा अभी जितना भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, आप नेक्स्ट आने वाले एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी साइड से? कुछ ऐसी चीजें जो आप ऐड ऑन करना चाहो कि जो गलती आपने की थी, कि मतलब स्टार्टिंग में जब नहीं पता था थोड़ा सा इस तरह की गलतियां कर दी, ये लोग रिपीट ना करें, क्योंकि जो सक्सेस हुआ है उसी से सीखने को मिलता है। तो बाकी लोगों को आप समझाना चाहें कि किस तरीके से आप जो है अपनी इस गलतियों को रिपीट ना करें, जो आपने की थी वो उन लोगों को आप सलाह करें कि आप रिपीट ना करें चीजें। Yes, ma'am. I will just definitely told those things because what I thought that I got very few months for the preparations. Like हम्म। I have just cleared this examination in 1 or 2 months, I can say. So what happened? I was just previously preparing for the MA exam, as I have told you. यस। But for the new aspirants, I will just tell them that they will have to pick up very earlier. Like they will have to go for the MBA. So at least it needs some kind of 5 to 6 month preparations. You will have to give those months in your preparations, so you can go through all the concepts and practice. You can practice a lot. One thing which I can say that I got the proper guidance, which is हम्म। very required in the journey with what you are preparing for. यस। So if you have the proper guidance, so I think this is the best platform. I think Abhi Concept Channel is the best platform. You can go with this, and whatever they told you to do, just you can do it blindly. Like you can have the blind faith on them. If I can say for the MBA entrance for AU and BHU, because I have cleared both in यस। in the 2 months preparations. That's So very, very good. You have cleared that exam in just 2 months, with 2 months of preparation, having the mock test as well. That's really commendable. yes, ma'am. And I will just tell the one thing more.
about the GDPI, because Yes. it helped me a lot, because I go through the channel from very late. I go through the channel very late. I was very late to join this channel, but when I given the examinations, I told to Abhi sir in WhatsApp that I have just done this kind of questions, and I have this attempted, and they told me you can get a seat very easily, but you have to good in PI and GD. Yeah. So again, I was just believing in on him. Like, I was just rely on him that whatever he told me to do in the GDPI, I have just blindly followed. I go through the GD practices as well, and he had took the interview of Hmm. mine. So that helped me a lot. It just boost my score as well, because I got the good marks in GDPI as well. I think 70 round of I got. So in the practice mock GDs, they given me the scores. Hmm. In those scores, I was actually the highest score Scorer. achiever. So these were the just boost for me, because I Hmm. got a good groups where I can perform, where I can face the good kind of students there as well. So it helped me a lot. ओके, सो एवरीवन, आप लोग सुन रहे हैं कि आपको जो है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान देना है फॉर द जीडी एंड पीआई। Yes. उसके लिए भी आपको ध्यान देना है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी। एंड आपकी नॉलेज थोड़ी सी वैलिड होनी चाहिए, नॉलेज आपको थोड़ी चीजों की होनी चाहिए, करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको। वो रिटन एग्जाम एज वेल एज आपको जो एग्जाम जो जीडीपीआई होगा उसमें भी आपको ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। Yes, ma'am. सो बेसिकली एवरीवन, जो और लोगों के एक्सपीरियंस है उससे बहुत सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको रतन की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, रतन की अपनी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन इस स्ट्रैटेजी से आप सीख सकते हो कि हाँ ये चीजें भी आप अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे रतन ने अपनी स्ट्रैटेजीज में मॉक्स को इंक्लूड करा, टाइम मैनेजमेंट सीखा, उसकी अपनी मैथ्स रीजनिंग सब पे ध्यान दिया, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी। ये चीजें बहुत जरूरी है अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना। और गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है, अपनी सही गाइडेंस रखिए, मेंटोरशिप, गाइडेंस, सब चीजें सही रखिए। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हर दिन, जैसे आप रतन, क्या आप हर रोज क्या 6-6 7-7 घंटे पढ़ते थे? No, ऐसा ma'am. No, ma'am. It was फिर not मतलब क्या था? happened with me. Like, I have just very easy schedule for me, so I can do that very well. But for myself, I think productivity matters. Yeah, The time you are quality matters. investing in, yes, ma'am. So I can do it that in 4 to 5 hours as well, rather than wasting my 12 to 13 hours in that those Exactly. kind of things. So always my concern was the productivity, how much time I am investing. I am just whatever the amount, whatever I am getting, that was my concern. Exactly. This is the main thing, that quality matters, not the quantity you are serving. Like, ऐसा नहीं है कि आपको 10 घंटे पढ़ना, अगर आप वह 10 घंटे की चीज है आप 5 आवर्स में बहुत इन्वेस्टेड होकर उस समय पढ़ाई करके अपना कंप्लीट करिए, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा रादर देन इन्वेस्टिंग 10 years एंड नॉट गेटिंग द फ्रूटफुल रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये चीजों का भी आप लोग जरूर सब लोग ध्यान रखिए। इन चीजों को पे ऊपर ध्यान रखोगे तो इट्स वेरी इजी कि आप जो है अपनी इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जाम निकल ही जाएगा, इट्स इजी कि आप उसको एग्जाम को थोड़ा क्रैक करने में नजदीक पहुंच जाते हैं। बाकी हमारी हार्ड वर्क सबसे ज्यादा मैटर करता है। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, गाइडेंस, ये सारी चीजें एक साथ क्लब करते हैं, तभी एग्जाम कोई भी क्लियर हो पाता है, वेदर इट बी एमबीए, वेदर इट बी एलएलबी और एनी अदर एग्जाम। ओके, so this was all about this. Thank you so much, Ratan Jha, for sharing your experience with us. Again, I congratulate you on clearing the exam and getting your dream college. So thank you so much for sharing that. और अपने हमारे viewers को भी, next upcoming aspirants को भी advise करने के लिए, वो इससे बहुत चीजें सीखेंगे, समझेंगे कि क्या उनको भी चीजें फॉलो करनी चाहिए, so that वो भी अपने ड्रीम को अचीव कर सकें। Thank you so much, ma'am, for you as well. You as well for having me on the interview section. Thank you so much for that. And I really want to say all the best to you for your upcoming exams and everything, all जो भी आपकी लाइफ में चीजें आने वाली, all the very best to you, Ratan. Thank you, ma'am. Thank you so much.